हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन, who were walking to school together at the beginning of the chapter? So चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, there were two students who were walking towards the school. So उनके नाम क्या थे? A रवि एंड मोहित, आशा एंड मोहित, Asha and Ria, Aman and Mohit. So what is the correct answer? So the correct answer is Asa and Mohit. Next, according to Mohit, why does he love going to school? उसे स्कूल जाना क्यों पसंद था? Because he gets homework, because he can sleep there, because he meet friends, play games and learn new things, because it is near to his house. So मोहित को स्कूल जाना क्यों पसंद था? So it is because he meet friends, play games and learn new things. ना अपने दोस्तों से मिलते हैं, गेम्स खेलते हैं और नई चीजें सीखते हैं. Next, a school should make children feel. So स्कूल को कैसा होना चाहिए? वहाँ children कैसा feel करें? Scared, safe and cared for, lonely or tired. So yes, the correct answer is safe and cared for, right? Next, what did Asa want to make her school? आशा अपने स्कूल को क्या बनाना चाहती थी? A स्मार्ट स्कूल, B डिजिटल स्कूल, C ग्रीन स्कूल और D स्पोर्ट्स स्कूल. सो आशा अपने स्कूल को ग्रीन स्कूल बनाना चाहती थी, right? Next, a green school manages its dash properly. A homework, waste, एग्जाम्स और हॉलीडेज. सो ग्रीन स्कूल किस चीज को अच्छे से मैनेज करता है? सो यस, इट इज द वेस्ट, राइट? इट इज द वेस्ट which the green school manages it properly. Next, a green school encourages saving. So green school क्या encourage करता है? Saving of what? Money, food, water और clothes. So green school हमेशा पानी को सेव करने पे फोकस करते हैं, right? Next, what should be used carefully in a green school? So green school में क्या चीज बहुत carefully use करना चाहिए? Electricity, chalk, books or a bags? So yes, it is electricity, right? Next, a green school becomes greener by planting more dash. So green school greener कैसे बनेगा? By planting, क्या plant करने से? Benches, trees, buildings or roads. So yes, it is the trees. ना trees जितने ज़्यादा से ज़्यादा trees को हम plant करेंगे, school और भी greener बनेगा. Next, who asked the student how they would begin making their school greener? So स्कूल में किसने पूछा था कि स्कूल को आप greener कैसे बना सकते हो? So it was the principal, Mohit's father, teacher Anupam or gardener. So it was teacher Anupam, right? Next, which of these should be included in the school map? अगर आप स्कूल का मैप बना रहे हो तो क्या चीज इंक्लूड करोगे आप? Playground, garden, water tanks or all of these? So yes, it is all of these. ना हम स्कूल का जब मैप बनाते हैं, we include everything, whatever is there in the school, we include everything. Which mission focuses on keeping school clean and healthy? कौन सा मिशन फोकस करता है स्कूल को क्लीन और हेल्दी रखने में? जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, डिजिटल इंडिया और फिट इंडिया? सो यस, इट इज स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय. ना इस मिशन के तहत हम अपने स्कूल को क्लीन और हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी इन अ डैश इन्वायरमेंट. हर चाइल्ड का एक हक है कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ाई करे. सो एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट, क्राउडेड, क्लीन एंड अ सेफ और अ डस्टी. सो किस टाइप के इन्वायरमेंट में बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे? सो येस, इट इज़ द क्लीन एंड सेफ, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम चेक्स लीकिंग टैप्स? हमने देखा था ना चैप्टर में
So they have made several teams and every team has some work. ना हर टीम का कुछ अलग अलग काम था. So which team will check the leaking taps? It was the waste warrior, traffic tracker, water watcher or a green guardians. So it was the role of the water watcher. Now water watcher का काम था to check any leaking taps. Next, which team checks unnecessary use of light and fans? So किस टीम का काम था कि देखना कि unnecessary light और fan use हो रहे हैं कहीं पे. So it was the uh, r- duty of electricity saver, green guardians, waste warrior or a traffic tracker. किनका काम था? So it was the duty of electricity saver. ना उनका काम था to check if there is a wastage of electricity somewhere. Hmm. Next, which team observes trees and plants? किस टीम का काम था trees और plants को observe करने का? Traffic tracker, green guardians, water watchers, electricity saver. So yes, it is the role of the green guardians. No. Next, which team studies traffic outside the school gate? So, traffic तो school के बाहर लगता है. So, which team has the duty to check the traffic outside the school gate? It was a waste warrior का काम था या electricity saver, traffic tracker or a green guardians. So, it was the duty of traffic trackers. No? Next, which team checks whether students are using dustbin? So, किस टीम का काम था कि चेक करना कि students dustbin use कर रहे हैं कि नहीं? It was the duty of waste warrior, green guardians, water watcher or electricity saver. So, yes, it was the duty of waste warrior. No? Next, electricity savers also observe whether classroom use. So electricity saver तो ये check कर रहे थे is there any wastage of electricity or not. They were also observing that the classroom is using what? Candles, natural light, torch light or mobile light. So electricity saver और क्या check कर रहे थे कि classroom क्या use कर रहा है. Candles, natural light, torchlight or mobile light. So they were checking that the classroom is using that sufficient natural light or not. अगर natural light class में आ रहा है तो उसका use कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? Next, green guardians also observe whether dash visit the plants. So green guardians और क्या observe कर रहे थे? They were checking how many plants, trees are there. They were also observing who is visiting the plants. So क्या observe कर रहे थे? Who is visiting the plants? It was the dogs, cats, birds and butterflies or horses. So they were also observing whether the birds and butterflies is visiting the plants or not. Okay. Water watchers check whether water tanks are dash. सो वाटर वॉचर क्या चेक कर रहे थे कि वाटर टैंक्स कैसा होना चाहिए एम्प्टी पेंटेड क्लीन एंड कवर्ड लॉक्ड सो वाटर वॉचर्स वे चेकिंग वेदर द टैंक्स आर क्लीन एंड कवर्ड ना जहाँ से पानी आ रहा है टैंक से वाटर टैंक से वो क्लीन है कि नहीं कवर्ड है कि नहीं प्रॉपरली नेक्स्ट ट्रैफिक ट्रैकर्स चेक फॉर अ डैश क्रॉसिंग नियर द स्कूल सो ट्रैफिक ट्रैकर्स क्या चेक कर रहे थे which type of a crossing railway pedestrian bridge or a river what kind of a crossing they were checking so yes they were checking is there any pedestrian crossing or not the zebra crossing or not next waste warriors check whether there are separate bins for so waste warrior और क्या check कर रहे थे कि separate bins for what books and notebooks, food waste and other waste, pencils, pens and pencils, bottles and bags. So they were checking there are separate bins for. So yes, it is food waste and other waste. So food waste or dry waste ना wet waste और dry waste के लिए separate dustbins है या नहीं ना? In many villages, floors are cleaned with dash to keep insects away and keep houses cool. सो अभी भी विलेजेस में फ्लोर्स को किस चीज से क्लीन किया जाता है सो दैट टू कीप द इंसेक्ट्स अवे एंड ऑल्सो कीप हाउसेस कूल
विद द सीमेंट, सीमेंट से क्लीन किया जाता है, काउ डंग एंड मड, or a paint or a sand. So what is used? So yes, it is the cow dung and mud is used, so that to keep the insects away and keep the houses cool. Next, which village is mentioned as Asia's cleanest village? So कौन सा village एशिया का cleanest village है? It is Malegaon, शनि सिंगनापुर, खजुराहो और चेरापूंजी. So yes, it is Malignong. ठीक है? It is Asia cleanest village. Next, waste can be reduced by dash. हम waste को कैसे reduce कर सकते? Throwing everything away, buying more things, using only what we need, burning all waste. So how we can reduce the waste? So yes, by using only what we need. Next, which of the following is an example of wet waste? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक wet waste का? प्लास्टिक बॉटल, ग्लास, फूड पील्स और a metal cane. So yes, it is the food peels. No, it is an example of a wet waste. Which of the following is an example of a dry waste? Leftover food, vegetable peels, paper, fruit waste. So ड्राई वेस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे? सो यस, इट इज द पेपर. पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई वेस्ट. नेक्स्ट, वेस्ट शुड बी सेपरेटेड इनटू डैश कैटेगरीज. सो वेस्ट को किन कैटेगरीज में सेपरेट करना चाहिए, कैटेगराइज करना चाहिए? 3 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में, या और ड्राई एंड वेट कैटेगरी और 5 कैटेगरी. So waste should be separated into dry and wet categories. ना हम दो, एक dry waste and the other is wet waste. ठीक है? Next, which color bean is generally used for wet waste? जो गीला कचरा होता है उसके लिए जो हम डस्टबिन यूज करते हैं वो किस कलर का होता है? It is blue, green, red or a yellow. So it is green in color. Okay? Which color bean is generally used for dry waste? So dry waste के लिए जो डस्टबिन यूज करते हैं, what is the color of the dustbin? किस कलर का डस्टबिन होता है? It is blue, green, black or a white. So it is blue in color, right? So for a wet waste, it is green and for dry waste, it is blue. ओल्ड न्यूज़पेपर्स आर यूजुअली गिवन टू डैश. सो ओल्ड न्यूज़पेपर का हम क्या करते हैं? गिव इट टू टीचर्स, रिसाइकलर्स, फार्मर्स और ड्राइवर्स. किनको देते हैं? सो यस, वी गिव द ओल्ड न्यूज़पेपर टू रिसाइकलर्स. नेक्स्ट, डिफरेंट रिसाइकलर्स कलेक्ट डैश. सो वो क्या कलेक्ट करते हैं? ओनली प्लास्टिक, ओनली पेपर, different kinds of items, only glass. So the different recyclers collect different kinds of item. वो प्लास्टिक भी लेते हैं, पेपर भी लेते हैं, metals भी लेते हैं, ग्लास भी लेते हैं, tin cans भी लेते हैं. So they take different kinds of items and they recycle it. Next, what does the chapter encourage students to learn from the recyclers? So हम recycler से क्या सीखते हैं? Dancing, their work and recycling process, cooking or a driving. So we learn their work and recycling process. ठीक है? Next, discussing the work of a recyclers help students learn the value of. अगर हम recycler के काम को देखेंगे, उनसे हम क्या सीखते हैं? What value we get? Money, dignity of labor, competition, entertainment. क्या सीखते हैं? So dignity of labor. So the recycler is contributing to the to save the environment को save करने में वो help कर रहे हैं. So we should do our work with dignity. ठीक है? Next, why should we separate waste? हमें waste को क्यों separate करना चाहिए? To increase garbage, to manage waste better, to waste time,
to make dustbins he to make dustbins heavier. So why we should separate waste? So yes, to manage waste better. ना अगर हम segregate कर देते हैं कचरे को, it's easy. Like a wet waste, from the wet waste we can make manure, and dry waste can be recycled. Okay. Next, the chapter asks students to think about making the work of sanitation workers. So uh, a lot of our people are uh, working in our society to make it clean ना, बहुत लोग हमारे सोसाइटी में काम करते हैं to make the things clean, like रोड की सफाई, पार्क की सफाई. So they are called sanitation worker ना. So um, how we can also make the work of the sanitation worker, हम हमें sanitation worker के काम को ज़्यादा टफ बनाना चाहिए, हार्डर, easier and safer, longer और more difficult. हमें क्या करना चाहिए? So we should try to make their work easier and safer. अगर हम भी पब्लिक प्लेसेस को साफ रखने में हेल्प करेंगे, so their work will be easier. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट कैन हेल्प कीप क्लासरूम कूल? सो क्लासरूम को कूल कैसे रख सकते हैं? क्लोज्ड विंडोज, विंडो को बंद कर कर, शेड फ्रॉम द ट्रीज, ट्रीज लगाकर, सो दैट द क्लासरूम गेट द शेड फ्रॉम द ट्रीज, ब्लैक रूफ और नो वेंटिलेशन. कैसे हम क्लासरूम को कूल रख सकते हैं? सो बाय फ्रॉम द शेड फ्रॉम द ट्रीज. अगर हम क्लासरूम के बाहर अगर ट्रीज लगाएंगे, सो वी गेट द शेड फ्रॉम द ट्रीज एंड द क्लासरूम विल बी कूलर. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अ रूफ रिफ्लेक्ट्स द सन्स हीट? कौन सा रूफ सन के हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है? इट इज ब्लैक रूफ, वाइट रूफ, रेड रूफ और अ ब्लू रूफ. सो किस टाइप के रूफ सन की हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं? सो इट इज द वाइट रूफ ना. सो वाइट रूफ रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सन्स हीट. नेक्स्ट, विच कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट? कौन सा कलर सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है? इट इज वाइट, ब्लैक, ग्रीन और येलो. सो इट इज ब्लैक, राइट? Black absorbs the maximum amount of a heat. Next, so in activity 3 student paints two tiles. So हमने देखा था ना activity में they have taken two tiles and they painted the two tiles. So which color they have used to paint the tiles? कौन सा color use करते हैं tiles को paint करने के लिए? Green and blue, red and yellow, black and white, pink and orange. कौन सा दो color use करते हैं? So it was black and white ना. नेक्स्ट, विच टाइल फील्स कूलर आफ्टर बीइंग केप्ट इन द सन? सो हमने दोनों टाइल को जो पेंट कर दिया था ना वाइट एंड ब्लैक से, एंड वी हैव पुट इट इन द सन. सो विच टाइल फील्स कूलर आफ्टर बीइंग केप्ट इन द सन? सो सन में कुछ समय रखने के बाद कौन सा टाइल थोड़ा ठंडक था? इट वॉज अ ब्लैक टाइल, वाइट टाइल, बोथ इक्वली, नीदर. So it was the white tile which feels cooler. ना धूप में रखने के बाद भी आप देखोगे कि वो काफी ठंडा है. Next, water is described in the chapter as a precious. So इस chapter में हमने देखा ना water को कैसे describe किया गया है? As a precious toy, treasure, game or a machine. So the water is described as a precious treasure. Next, इवन अ स्मॉल लीकिंग टैप कैन वेस्ट ना. अगर बहुत हल्का सा वन ड्रॉप भी अगर टैप से लीक हो रहा है, दैट लीकिंग टैप कैन वेस्ट अ लिटिल वाटर ओनली, अ लॉट ऑफ वाटर ओवर टाइम, नो वाटर और ओनली वन ग्लास ऑफ अ वाटर. क्या होगा? So even a small leaking tap can waste a lot of water over time. ना एक एक बूंद से आप देखोगे कि the whole bucket can be filled in 1-2 hours. So like that, a lot of water can be wasted. Next, which campaign encourages people to save water, plant trees and collect rainwater? So कौन से campaign में हम
पीपल को इनकरेज करते हैं, लोगों को ये बताते हैं टू सेव वाटर, प्लांट ट्रीज एंड कलेक्ट रेन वाटर थ्रू डिजिटल इंडिया कैंपेन, जल शक्ति अभियान, स्किल इंडिया और अ फिट इंडिया. सो इट इज द जल शक्ति अभियान. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रीज हेल्प टू कीप द सराउंडिंग. सो ट्रीज सराउंडिंग को क्या करते हैं? डर्टी, नॉइजी, कूल और डार्क. सो ट्रीज कीप द सराउंडिंग कूल. जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना हमारा सराउंडिंग ठंडा रहेगा. नेक्स्ट, ट्रीज प्रोवाइड डैश टू बर्ड्स एंड इंसेक्ट. सो ट्रीज क्या प्रोवाइड करती है बर्ड्स और इंसेक्ट को? होमवर्क, फूड एंड शेल्टर, टॉयज और क्लोथ्स. सो ट्रीज प्रोवाइड food and shelter to birds and insects, right? Next, trees help to keep the air dash. So trees हवा को क्या करती है? Dusty, clean, hot और smoky. So trees help to keep the air clean. Okay. Next, students are asked to name the dash near their school. So इस चैप्टर में हमने देखा था ना, द स्टूडेंट्स वे आस्क्ड टू नेम व्हाट? द रिवर्स नियर द स्कूल, ट्रीज नियर द स्कूल, माउंटेन्स और अ मार्केट्स. सो द स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू नेम द ट्रीज नियर द स्कूल. कितने डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज आपके स्कूल के पास है, उन सबके नाम लिखने हैं ना. नेक्स्ट, which living beings are commonly seen near school plants and trees? सो कौन से लिविंग क्रिएचर आपको पेड़, स्कूल में जो पेड़ होते हैं या आस पड़ोस में जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके आसपास कौन से लिविंग क्रिएचर आपको इजीली दिख जाते हैं? इट इज फिश एंड वेल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, लायन एंड टाइगर्स, कैमल एंड हॉर्सेस. सो इट इज द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, राइट. सो जनरली आप प्लांट्स या ट्रीज जो भी घर के आसपास है, आप देखोगे कि यू कैन इजीली फाइंड द birds and insects. Next, which instrument is used to measure the temperature of water? So water के temperature को हम किस instrument से measure करते हैं? Compass, thermometer, scale और a stopwatch. So through a thermometer you can measure the temperature. किसी भी चीज का temperature अगर measure करना होता है, we use thermometer. Next, Asha and Mohit wanted to spread awareness about problems in the. So Asha और मोहित ये चाहते थे ना, they want to spread the awareness about the problems in the classroom only, community and society, playground only और library only. So वो किस टाइप का अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे, किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए? जो सिर्फ क्लास में होता है, या फिर कम्युनिटी एंड सोसाइटी में होता है, या प्लेग्राउंड में होता है, या फिर लाइब्रेरी में होता है? So they wanted to spread awareness about the problems which are there in the community and society. जो problems community और society में है, उसके लिए वो awareness create करना चाहते थे. Next, according to Mohit, many accidents happen because people do not follow. So बहुत सारे accidents क्यों होते हैं? So according to Mohit, he think that the many accidents happen because people do not follow school rules. School rule follow नहीं करते, traffic rules, sports rule, library rules. So किस rule को follow नहीं करते हैं, and because of that a lot of accidents happen. So yes, it is the traffic rules. ना, लोग traffic rules follow नहीं करते हैं and there are lot of accidents. Next, traffic rules help to keep people. So traffic rules क्या करते हैं? They help to keep the people busy, safe, late or famous. So traffic rules help to keep the people safe. Next, students are asked to design a dash for the school gate. So students ने traffic को manage करने के लिए क्या बनाया? Classroom, signboard, garden or a playground. So they have prepared some signboard for the school gate. ना, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए उन्होंने साइन बोर्ड बनाया था. नेक्स्ट, अ स्कूल गेट साइन बोर्ड शुड गिव अ क्लियर मैसेज टू. सो ये साइन बोर्ड मैसेज किसको देता है? टीचर्स ओनली, ड्राइवर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स.
shopkeepers only, gardeners only. So a school get signboard give message to driver, parents and student जो भी वहां से क्रॉस कर रहा है, it give a clear message to them. Either it's a driver हो या parents हो या students हो. Next, beside words, students can use dash on the signboard. So words ना लिखकर it's better to uh, represent the signboard with what? Symbols and drawing, songs लिखकर poem और stories. So signboard में अगर हम words की जगह symbols और drawing use करेंगे, it will be more effective. Next, learning about fire safety helps everyone feel. So अगर फायर सेफ्टी के बारे में आपको पता होगा तो कैसा फील होगा? एंग्री, safer and more confident, sleepy or a confused. So you will feel safer and more confident. अगर आपको पता होगा कि फायर अगर कहीं पे भी फायर लग जाए तो क्या करना है, so you will not get panic. आप पैनिक नहीं करोगे and you will feel safer and more confident and handle the situation better. Next, students should know where the dash is kept in school. Students को क्या पता होना चाहिए कहाँ रखा है? Football, fire extinguisher, school bell or a water bottle. So students should know where the fire extinguisher is kept. ना generally हम देखते कॉरिडोर में, stairs पे. So you should know कि fire extinguisher कहाँ है, ठीक है? Next, during a fire drill, students should dash. So fire drill एक mock drill होता है जिसमें बताया जाता है कि in case अगर fire लगता है तो आपको क्या करना है. So students should panic, run quickly, move calmly to the nearest exit, hide under desk. क्या करना चाहिए? पैनिक करना चाहिए या जल्दी भागना चाहिए या आराम से nearest बहुत calmly. You should be fast, but you should not get panic. So calmly nearest exit से निकलना चाहिए. So you should move calmly to the nearest exit. Next, if there is a smoke, student should dash. अगर smoke है तो क्या करना चाहिए? Stand straight, crawl low with their mouth covered, jump over the smoke, run through it. क्या करोगे आप? So you should crawl low क्योंकि धुआं तो ऊपर उठता है. So you could crawl, okay, and cover your mouth. Next. After reaching the assembly point, a student should immediately inform the teacher if someone is. So अगर in case there is a fire, आप निकल गए हो, आप assembly point पे आ गए हो. But if you find that someone is missing or injured, you should immediately inform the teacher. So students should immediately inform the teacher if someone is. So कब आपको inform करना है teacher को? If someone is sleeping, सो रहा है कोई तब inform करोगे या playing or missing or injured or eating. So you should inform the teacher if someone is missing or injured. कोई अगर missing है या फिर चोट आई है, you should immediately inform the teacher. Next, good behavior makes places dash. अगर good behavior आपका है तो उस जगह पे कैसा फील होगा? Dirty, peaceful and welcoming, crowded or dangerous. So, good behavior make places peaceful and welcoming. ना अगर good behavior होता है तो उस place पे रहना अच्छा लगता है, बहुत शांति होती है. Next, which of the following is an example of a bad behavior? So इनमें से कौन सा example एक bad behavior का है? Waiting for your turn, helping a friend, pushing and skipping the line, speaking politely. So yes, it is the pushing and skipping the line is the example of a bad behavior. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, and we should not skip the line. We should wait for our turn. Next, one student kept teasing and making fun of another student. This behavior is. So एक student दूसरे student का मजाक उड़ा रहा है, tease कर रहा है, passing comment. So this behavior is respectful. ऐसा behavior respectful होगा, kind होगा, wrong होगा या helpful होगा. So this behavior is wrong. Next, respect and kindness are shown by dash.
सो रिस्पेक्ट और काइंडनेस कैसे दिखाया जा सकता है? फाइटिंग विथ अदर्स, दूसरों से झगड़ा कर कर, वेटिंग फॉर आवर टर्न, अपने अपनी बारी का आने का इंतजार करने में, वेस्टिंग वाटर और थ्रोइंग लिटर। सो रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस कैसे हम दिखा सकते हैं? वेस्ट वाटर वेस्ट कर कर, कचरा फैलाकर? नो, वी शुड वेट फॉर आवर टर्न ना। अगर हम अपनी लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं, वी शुड वेट फॉर आवर टर्न। दिस शोज रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज शोज काइंडनेस? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको लगता है दिस इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस? यूजिंग रूड वर्ड्स? नो, नॉट एट ऑल। अगर आप खराब शब्द यूज कर रहे हो, दिस इज नॉट एन काइंडनेस। हेल्पिंग समवन? यस। ब्रेकिंग क्लासरूम फर्नीचर? नो, अगर क्लासरूम के फर्नीचर को आप तोड़ रहे हो, दिस इज नॉट एट ऑल गुड ना। इग्नोरिंग अदर्स, दूसरे को इग्नोर करना? नो, नॉट एट ऑल। सो इट इज हेल्पिंग समवन इज अ एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है। नेक्स्ट, कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन हेल्प्स मेक द स्कूल। अगर हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे, दिस विल हेल्प टू मेक द स्कूल डर्टियर, ना गंदा करेगा, हैप्पियर, स्मॉलर और डार्कर। सो इफ वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, द स्कूल विल बी हैप्पियर। नेक्स्ट, which of the following helps make a school a happy place? So इनमें से कौन से एग्जाम्पल है जिससे हम स्कूल को हैप्पी प्लेस बना सकते हैं? सेविंग वाटर, मैनेजिंग वेस्ट, केयरिंग फॉर प्लांट्स, ऑल ऑफ दीज। सो यस, ऑल ऑफ दीज ना। अगर हम पानी को सेव करते हैं, वेस्ट को अच्छे से मैनेज करते हैं, प्लांट्स की केयर करते हैं, सो ऑल दीज आर will make the school a happy place. Next, students should think about extending good action to their, so स्टूडेंट्स अपने जो गुड एक्शन अपने फ्रेंड्स के साथ तो गुड बिहेव करते हैं, बट दे शुड हैव अ गुड बिहेवियर विथ होम? होम, नेबरहुड एंड कम्युनिटी, क्लासरूम ओनली, प्लेग्राउंड ओनली, स्कूल बस ओनली। सो आप देखो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर सिर्फ क्लास में ही अच्छे हैं, बाहर अच्छे नहीं है, दैट्स नॉट गुड ना। सो आवर गुड बिहेवियर शुड बी रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर। आप कहीं पे भी हो, आपका गुड बिहेवियर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो इट शुड बी इन द होम, नेबरहुड एंड कम्युनिटी, हर जगह आपका गुड बिहेवियर दिखना चाहिए। ठीक है, चाहे आप कहीं पे भी हो, घर पे हो, नेबरहुड में हो या कम्युनिटी में हो, कहीं पे भी हो। नेक्स्ट, according to the chapter, making a school a happy place is the responsibility of। सो स्कूल को हैप्पी प्लेस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओनली टीचर्स, ओनली प्रिंसिपल, एवरी स्टूडेंट एंड एवरीवन इन द स्कूल, और ओनली पेरेंट्स? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट्स एंड एवरीवन इन द स्कूल, आइदर इट्स अ टीचर, principal, parents, everyone is having a responsibility to make the school a happy place. ठीक है, so we have completed all the 70 question and answer. So thank you everyone. So hope ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। See you in the next class. Till then, bye, take care.